हाय गाइस वेलकम टू ओएस हब केमती अछंती आपण माने सोशियोलॉजी ऑप्शनल आपनकर हमें एज यूजुअल जेमती डिस्कशन करूथलो जो माने देखुचंती और आवाज सुनी पारचंती मैं ऑडिबल गाइस तो सोशियोलॉजी ऑप्शनल जो माने ऑप्शनल पई रेडी अछंती या ऑप्शनल पई इच्छुक अछंती जॉइन ओके आउ लेट न करी हमें स्टार्ट करिवु तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमें डिस्कशन करथुलु 2023 आमर पेपर वन पूरा डिस्कसन होगी आपण चारिटा पार्ट तार देखी देते चारिटा पार्ट रे मु पूरा 2023 क्वेश्चन कर देछि देखंतु एवं से पार्ट को जाइकी आपण ओएस ऑफ चैनल रे देखंतु कि आपण को डेफिनेटली हेल्प करिवो प्रिपरेशन जर्नी रे काइना जो सोशियोलॉजी ऑप्शनल रे कथा लेकि पिला बहुत एपियर करूचंती बहुत पढुचंती बट किछि पिला माने जो माने सिलेक्ट हो नांती या कम मार्क रखुचंती काइना ऑप्शनल बिना आपण अन्य गति नाही कबिनु अन्य गति नाही सोशियोलॉजी बिना अन्य गति नाही काइना ऑप्शनल जते भलो लेखिबे से अनुसार आपण सिलेक्शन दबो ऑप्शनल ओनली माने ये नुह बट ऑप्शनल बिना भी आपण सिलेक्शन हो ऑप्शनल को ही सिलेक्शन हबोनी नुह बट ऑप्शनल बिना आपण सिलेक्शन हबो तो बिना ऑप्शनल आपण सिलेक्शन कथा भाभी ही परिबेनी एवं माने बिना ऑप्शनल कहिया माने कि जस्ट बाय स्टडीइंग द ऑप्शनल सेल्फ स्टडी विल नॉट गिव यू एनीथिंग रिजल्ट आई नो यू आर कॉन्फिडेंट आई नो किछि पिला जानि जंती कि मु भाई पढी दे कि किछि भी करि देबी से कॉन्फिडेंस माने ठीक अछि बट वर्षे दि वर्ष पर यू विल कम टू नो देन तापर समय पळै जिवो सेई जो वर्षे दि वर्ष समय गबे माने जीवो आपनकर बर्बाद हबो ସେଇଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ସମୟ ସହିତ ଏନର୍ଜି ଯିବ ଟାଇମ୍ ଯିବ ମନି ଯିବ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ୱିଲ୍ ୱେଷ୍ଟ ତାପରେ ଶିଖିବେ ଏବଂ ଏମିତି ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ବର୍ଷେ ଦୁଇ ବର୍ଷ ପରେ ଆଣ୍ଡ ଦେ ରିଏଲାଇଜ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ୟେସ୍ ଆଇ ହେଭ୍ ଡନ୍ ସୋ ମେନି ମିଷ୍ଟେକ୍ସ ସାର୍ କ'ଣ କରିବା ବଟ୍ ସେଇଟା ବେଳହୁ ଗୋବିନ୍ଦ ସ୍ମରଣ କରିବା ବେଟର୍ ହେବ ରେଦର ଦେନ୍ ଥିଙ୍କିଂ ୟୋର୍ ସେଲ୍ଫ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆଇ ନୋ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଏ ଥଟ୍ସ ଆମେ ବି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଥିଲେ ଆମର ବି ଆସୁଥିଲା ଆଣ୍ଡ वी लर्न फ्रॉम देयर वी लर्न फ्रॉम देयर सो आपण माने भी जल्दी सीखी गले बेटर हम आपन को एटी सिलेक्शन हबार अछि ना रिसर्च करिवार अछि ना सोशल आपन को पीएचडी डॉक्टरेट करिवार तो आमको एमिति गोटे प्रोसेस जानिया दरकार जो ता थ्रो रे आपन को सिलेक्शन ही कोन सिलेक्शन पई जतियो मार्क दरकार काइना देखंतु 250 240 230 सिलेक्शन हो 50% मार्क्स इन द ऑप्शनल विल नॉट गिव यू एंड 30 50 मार्क्स जो एक्स्ट्रा आपण पाइबे 290 300 320 300 लास्ट ईयर तो देखिबो सेही अनुसार भल मार्क्स पाई परिबो जदि आपण माने गोटे आपन भाभी आपन लागु कि मु एई वर्ष 200 रखिची या 220 रखिची आगो वर्ष आउटी पड़ देला आउटी अधिकार रखियो ना बेटा कमी भी जाउची ओके पिला कमी भी जाउची मार्क्स आपण माने देखिथिबे ये देखिथिबो से जानिबो कि मार्क्स कमुची किछि पिलांकर मु देखिची बहुत सारा पिलांकर मार्क्स आसीची मो पाख मु देखिची केमिति मार्क्स कमी भी जाउची काहे ना तुमे सेही प्रोसेस रे लेखुचो देयर इज नो डेवलपमेंट यो भाबुचो तुमे टिके रिवाइज आउट भल से कर देले मार रही जिवो but there is a fundamental problems you are facing and there is a issue uh, uh, of the writing the answer writing the good answer writing the optional specific answer এবং সেইটা পিলা বারম্বার ভুল কর দিস ইজ অপশনাল তুমি সমস্তে জিএস ভলিয়া লেখিকি আসছেন
कि जमी क्वेश्चन आसूची जीएस भाया आंसर भी जीएस भाया लिखिदी पड़ी आस ସେଇଟା ପ୍ରୋब्लेम होची ओके लेट डिस्कस आमे आगु को या ऊपर डिस्कस करिबा कि केमिति आंसर लेखे मु ऑलरेडी पेपर 1 तो मु देख 2023 रो काहे करछि लेटेस्ट 2022 23 रो मु सॉल्व कर देबी एस रे देन यूपीएस रे भी मु आगु को तुमको यूनिट वाइज सॉल्व करबी एवरी यूनिट रे मु क्वेश्चंस पीवाईक्यूज एंड ता रिलेटेड किछि क्वेश्चंस आउ मु देबी आपण माने लेखिबे डेली आंसर राइटिंग मु डे करबी डेली आंसर राइटिंग आपण दीदीटा क्वेश्चंस लिखिपारे एवरी अल्टरनेटिव डे से करेबी आपको ट्राई करेंगे तो जो मैंने सोशियोलॉजी ऑप्शनल इच्छुक अच्छा आपण मैंने डेफिनेटली ये वीडियो गुड़ा देखीदेवे सो आपको डेफिनेटली हेल्प कर गोटे फाउंडेशन बैच स्टार्ट करछि जे कि जो मैंने मेन्स दौरान भी हो पार एलाबोरेटली डेली क्लासेस होची से डेली आपन को 1.5 ରୁ 2 घंटा क्लासेस हम एवं सेटा फेब्रुआरी 20 भीतर आई विल ट्राई टू कंप्लीट फेब्रुआरी 15 सॉरी सो फाउंडेशन बैच देन आउ गोटे है कि सोशियोलॉजी रो मेंटरशिप जे केवल पढ़ी सारी सी भावी कि फंडामेंटली क्लियर अच्छी कि तुमको आंसर राइटिंग रे किसी दरकार क्वालिटी मेंटरशिप प्लस टेस्ट सीरीज ये दीटा नहीं कि आपण भी पढ़ी पारे सो जल्दी आपण मैंने रजिस्टर करूँ दि जा नंबर रे रजिस्टर करूँ एनरोल करूँ जल्दी जल्दी एनरोल करूँ एवं मिस करूँ ऑलरेडी इन फाउंडेशन बैच आई हैव कंप्लीटेड 1 यूनिट फाउंडेशन बैच रे गोटी प्रथम यूनिट कंप्लीट कर सारे एवं मेंटरशिप रे मु मध्य 2023 रो पेपर 1 सॉल्व कर सारे मेंटरशिप एबे मु फ्री दउची किछि क्लास 2023 टा मु पूरा फ्री दे दी देन 2022 अगेन मु यूनिट वाइज आपन को करेबी तो जो माने जल्दी जॉइन करना डू जॉइन एज एज फास्ट एज पॉसिबल देन जीएस पई आपनकर टेस्ट सीरीज एंड मेंटरशिप रे टेस्ट सीरीज तो कॉम्बो नेले आपन को 1000 टंका पाखापाखि कम मिल जिवो कम हो जिवो एवं टेस्ट सीरीज रे आपन को बेस्ट क्वालिटी टेस्ट सीरीज सेइथरे आपन मॉडल आंसर मिल जिवो सेइथरे आपन को डिस्कशन मिल जिवो सेम डे डिस्कशन आपन पाई जिवे टेस्ट सीरीज रे एवं इवैल्यूएशन सह आपन पूरा कंप्लीट पाई जिवे तो मेंस मेंटरशिप रे मध्य कॉम्बो आपन नै परिबे मेंटरशिप प्लस टेस्ट सीरीज रही कि आपन नै परिबे सेटा बेटर हबो कि हमें कवर करि जाउथो टॉपिक वाइज तार क्वेश्चन सॉल्व करिवे ए अनुसार आपनकर तो आपनकर जल्दी जल्दी नियंतु देन यू विल डेफिनेटली गेट तो पेपर 1 सोशियोलॉजी रो पेपर 1 आमे सरी जाइथिला पेपर 1 परे तो सॉरी पेपर 1 2022 रो एटा आमे देखिबा 2022 रो पेपर 1 जोंडा कि 2023 रो पेपर 1 सरी जाइथिला आमे 2022 रो पे देखिबा तो ये क्वेश्चन सब थिला okay what is sense what is common sense in what sense it is a science explain करा जाओ view or Durkheim elementary form of life hypothesis कौन या पर details कौन करा जाओ observation what is observation give your advantage give your advantages of observation as a data collection discuss in details the relevance of pattern variable in social change these are 15 marks questions then ये सब आमे 1 by 1 सॉल्व करिवा बी रे जो क्वेश्चंस थिला डायरेक्टली हमर टेस्ट सीरीज क्लासेस रु आसी ची आपण माने देखियो व्हाट सेंस सोशियोलॉजी इज ए साइंस व्हाट सेंस सोशियोलॉजी इज ए साइंस तो सोशियोलॉजी यदि देखिबा कि प्रथम पई सोशियोलॉजी फादर ऑफ सोशियोलॉजी कहा जाए ऑगस्ट कॉम्ट बेसिकली प्रथम थर पई is a scientific study of the society. It is a scientific. So, only study of society is not a sociology. That is socio and logy. Logy means logos, study of, and study of what? Scientific study of and social relation. Scientific study of society and social. Term science implies a systematic body of knowledge that seeks to discover general laws through observation. Seeks to discover general laws through experimentation laws observation through रे experimentation through रे reasoning through रे मध्य करि sociology qualify as a science in this sense because they adopt scientific methods to study human behavior okay human behavior in text they adopt करिवे so in what sense sociology
बेसिकली साइंस के करा जाए देखिबा साइंटिफिक मेथोडोलॉजी कौन कौन आम सो ये डिफेक्शन सब देख कि मुझे ये क्वेश्चन करई या पूर्व भी करी पेपर वन आम 2023 रे सेते आप देखी कि सब थिंकर डेफिनेशन सब इनक्लूड करे ओके थिंकर डेफिनेशन सब इनक्लूड करे सो अगस्ट कमिटी ये डिफाइन करते साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी एंड सोशल रिलेशन तो ये कौन है ना तुम्हें लगे कि तुम्हें सोशियोलॉजी आंसर लिखुच ना कि नॉर्मल आंसर गोटे लिखुच से ही जिनस जमी लिखुन तो यू आर डिफाइनिंग समथिंग गिवन बाय द थिंग इज गिवन बाय द बेसिकली फादर ऑफ द सोशियोलॉजी तो सही गुड़ा जिनस बहुत जरूरी so scientific methodology so sociology follow the scientific method characterized by basically ଗୋଟେ observation हो observation hypothesis testing हो observation hypothesis data collection हो analysis हो theory and theory of development तो researcher in sociology design studies कौन ये स्टडी कौन करती कलेक्ट डाटा करती स्टडी करती डाटा कलेक्ट करती केमती डाटा कलेक्ट करती जमीक तुम्हें मार्केट को गले पचारे भाई परिवार रेट के तुमको पचारे भाई आलू रेट के क्या पचारे पियाज रेट के क्या पचारे टमाटो रेट के ये कौन कले सर्भे कले सर्भे करी फाइनाली 10 जन या 100 जन को पचारा गोटे डाटा गोटे बाहर कले से डाटा को कलेक्ट कले ताको एक्सपेरिमेंट कले ताको ऑब्जर्व कले एंड एनालाइज कले डाटा भाई हाँ परिवार रेट मसे पूर्व जहाँ थिला परिया बढ़ी देन हाइपोथेसिस टेस्टिंग माने हाइपोथेसिस माने कौन ना तुम्हें सोसाइटी गोटे प्रिजम्पशन अच्छी तुम्हें जाकि ओवरऑल गोटे आइडिया नहीं गल कि समस्ते कहते भाई मार्केट रे प्राइस राइज अच्छी इन्फ्लेशन अच्छी तो तुम्हें गोटे हाइपोथेसिस नेल कि देयर इज ए प्राइस राइज बट से प्राइस राइज जो हाइपोथेसिस अच्छी जोटा कि गोटे गोटे थियोरी अच्छी से थियोरीटा ट्रू या फॉल्स सेटा डाटा कलेक्शन एनालाइज फॉर इंस्टेंस रिसर्च द क्राइम रेट एंड देयर correction correlation with the socio-economic factors. So is a scientific approach to understand settle better. देखो मु जो एग्जांपल देली फिर एठी भी एग्जांपल तो एग्जांपल हेले कोन आपनकर जो पॉइंट को आपण जस्टिफाई करि पारे तो सब बेले ट्राई करिवे सब बेले ट्राई करिवे कि आपण जस्टिफाई करूथिबे आपण आंसर आंसर ब्लाइंडली सुपरफिशियली किछि लेखि देई पढि आसीबे ना आपन को एमिति आंसर लिखिबे सो दैट आपनकर पॉइंट जहाँ लिखुथिबे से पॉइंट को जस्टिफाएबल किछि एविडेंस दियो जे हम ଗୋଟେ एग्जांपल थ्रू रे आपण जस्टिफाई करले ओके सो लाइक दिस यू कैन सो प्रेडिक्टिव पावर जेमति अदर साइंस रो अछि सोशियोलॉजी मध्ये सेमति प्रेडिक्ट करे एक्सप्लेन करे तो यार मेन एम हेले कोन ना सोसाइटी को आमे केबे स्टडी करनथुवा सोसाइटी कोन डेली डेली खाउचे पिउचे बसुचे बट ताको गोटे सिस्टमेटिक वे स्टडी करवा स्टार्ट है गोटे सब्जेक्ट जोटा कि लेटली गोटे सोशल साइंस भाया कनसीडर प्रेडिक्ट एंड एक्सप्लेन सोशल बिहेवियर हो ट्रेंड हो या आउटकम बाय एनालाइजिंग पैटर्न को एनालाइज करवा स्टैटिस्टिक गोटे मॉडल बनैबा स्टैटिस्टिकल मॉडल बनैबा सोशियोलॉजिस्ट कौन ना गोटे प्रेडिक्शन बनाती कि जमती कार्ल मार्क्स प्रेडिक्शन कर कौन कार्ल मार्क्स कहते कि जो कैपिटलिस्ट वर्ल्ड अच्छी या कैपिटलिस्ट वर्ल्ड रे डोमिनेट धीरे धीरे कम्युनिस्ट या कम्युनिज्म इज द फ्यूचर फ्यूचर है कम्युनिज्म समस्ते मिलमिशिकी रही समस्ते मिलमिशिकी रही ओके by analyzing pattern and utilizing statistical model sociologists make prediction से भले करि परिबे certain variables देखि थाई तो सेटा इन्फ्लुएंस करिवे ह्यूमन बिहेवियर और सोसाइटी केमिति चेंज को वेरिएबल सोशल वेरिएबल्स तो जेमति यार एग्जांपल गुडे देखो फॉर इंस्टेंस मु पॉइंट गुडे देली और तारो जस्टिफिकेशन देली सोशियोलॉजिस्ट may predict the impact of technological advancement the impact of technological advancement on social interaction and norms based on history
and current trend. टेक्नोलॉजिकल एडवांस केमिति जानी परिबे कि नॉर्म्स पे जदि आमे देखिबा हिस्टोरिकल एंड करंट ट्रेंड अनुसार बेसिकली दीटा ये तो थियोरी डेवलपमेंट भी सोशियोलॉजी डेवलप द थियरीज बेस्ड ऑन and empirical evidence explain. So these theory provide a good framework for understanding societal process and behavior. Understanding societal process. One such example is Durkheim's theory of social integration, which explain the relationship between social cohesion and social. Okay, clear guys? Reproducibility and falsifiability. Scientific endeavor aimed for productivity, producibility, and allowing others to replicate, experiment, and test to validate or challenge findings. So, sociology study are designed to be replicate, enabling the validation of research outcome by other research. Validation, मानिने already research ହେଇକି ଅଛି, right? से रिसर्च ट्रू कि फॉल्स आउ जने रिसर्च कले ता सहित कंपेयर कर दबो तो ये जना पड़ जाए कि आउ थरे सेम रिजल्ट आसु ना रिप्रोड्यूसिबिलिटी और फॉल्सिफाइबिलिटी तो ये गोटे इश्यूज अच्छी देन सिमिलरली इंटरडिसिप्लिनरी सोशियोलॉजी सबले चाहे कि मेथड हो तार इनकॉर्पोरेशन ऑफ द इनसाइट कि वेरियस साइंटिफिक डिसिप्लिन सच एज साइकोलॉजी हो इकोनॉमिक्स एंथ्रोपोलॉजी पॉलिटिकल साइंस आम देखिए हिस्ट्री. So this broadens the methodological toolkit and enhance scientific. So sociology meets the criteria of a science. So a systematic methodology reliance on empirical evidence. So कहीं कि ये science को करा गला कौन जोटे कि हमारे आमे these are the main points आमे देखिले गुटे ला कौन ना scientific methodology यूज करिवा then predictive power, theory development, producibility and falsibility, interdisciplinary approach ये सब आमे देखिले. तो सोशियोलॉजी मीट द क्राइटेरिया ऑफ साइंस केमती साइंस क्राइटेरिया सिस्टमैटिक मेथोडोलॉजी जोंडे साइंस रो फॉलो करा जाए एम्पिरिकल एविडेंस डाटा ओरिएंटेड एविडेंस ऊपर से डिपेंड करूची रिलाय करूची प्रेडिक्टिव साइंस जेमती प्रेडिक्ट करि पारुची सेमती प्रेडिक्टिव पावर अछि थियोरी डेवलपमेंट जोंडे कि साइंस रो थियोरी डेवलपमेंट करा जाए एंड रिप्रोड्यूस सेम साइंस रो गुटे फॉर्मूला a + b रो होल स्क्वायर ये सबोले सेम प्रोड्यूस करिवो या चार्ल्स लॉ या बॉयल्स लॉ हो कि न्यूटन्स थर्ड लॉ हो या न्यूटन्स लॉज हो या कंजर्वेशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ये सब रिप्रोड्यूस बारंबार रिप्रोड्यूस जमती आम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करुचे जमती ओम्स लॉ हो तो किर्चॉफ वोल्टेज लॉ हो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हो ये सब बारंबार प्रोड्यूस रिप्रोड्यूसिबिलिटी पार्ट ऑफ साइंटिफिक स्टडी एंड इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच साइंस जेमिति फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ये सब इंटरडिसिप्लिनरी थाए से भला एठी भी. So by employing this scientific principle it advances our understanding behavior and social contributing to growth of knowledge in the same way other science do. Embracing the scientific approach allows for a more comprehensive understanding of complex social dynamics, aiding in addressing societal challenges and fostering. So next elaborate the view of Durkheim, the elementary of religion. So ये questions very important. जो first question था sociology science को science हमें ताकू गोटे systematic way रे justify करिगी हमें conclusion draw कले. So गोटे question अधिका समय नेली reason हैला your understanding केमिति ठीक करिवो केमिति आंसर लेखिवो आंसर लेखिवा very very important कि तुमरो आंसर लेख. So elaborate the views of Durkheim on the elementary form of religious life. Elaborate the views of Durkheim on the elementary form of religious life. So देखिवा the elementary form of religious life ये माल Durkheim लिखिथिले एवं यांकु भी मध्य फाउंडिंग फिगर ऑफ द सोशियोलॉजी कहा जाए एवं तांकर कोन काम कली से
ये फादर ऑफ मॉडर्न सोशल कहा जाए, फादर ऑफ मॉडर्न सोशल, मॉडर्न, okay, father of modern socialism. So published in 1912, Durkheim explore the sociological aspect of religion. So religion aiming to understand the fundamental nature and functive practices in the society. Chandrasekhar, you want to complete history? You can contact କରିପାରିବ। ଏଇଥିରେ ନମ୍ବର ଥିବ, ତଥାପି ମୁଁ ଗୋଟେ ନମ୍ବର ଦେଇଦେଉଛି, ଅଫିସ୍ ନମ୍ବରରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରିବ। Chandrasekhar, get this number contact and you can sir WhatsApp करो या किसी करो, तो you get the details. ओके, दिस माने कौन हला कि 1912 रे से पब्लिश करथिले डरखाइम कि अबाउट द कि एलिमेंटरी फॉर्म्स ऑफ लाइफ, से निजे सेटा को पब्लिश करथिले एवं सेइथरे सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट एक्सप्लेन करथिले कि रिलीजन के बेसिकली सोसाइटी ही डिसाइड करुची कौन रिलीजन कौन नहीं। सो से से बुझा चाहे कहते स्टडी करते रिलीजियस बिलीव एंड प्रैक्टिस। तो आम देखा से भ्यूज जो एलिमेंटरी फॉर्म ऑफ रिलीजियस लाइफ लिखी राइटिंग्स रे आम देखा। तो फर्स्ट है कि ना सोशल ओरिजिन ऑफ रिलीजन, ये कहले रिलीजन ओरिजिनेटेड फ्रॉम द ओके। सो डरखाइम आर्ग्यू दैट रिलीजन इज ए सोशल construct originating from collective beliefs and practices within. Durkheim argue kon kale na religion is a social construct originating from collective beliefs and practices in a society, right? So Durkheim प्रथम कहले kon religious कोठु आसी social origin, society जुगु ही collective beliefs, से इथु से totemism a concept देले। He asserted that religion is not a supernatural but it is a reflection of social solidarity, shared norms and values। कहले सेमति कि सुपरनेचुरल पावर नाही, रिलीजन माने गोटे भगवान अछंती नाही ना, सेमति किछ नाही। से कहले रिलीजन कहार ना सोशल सॉलिडारिटी, लोकंक भितरे जो गोटे यूनिटारी अछि, लोकंक भितरे गोटे कोहेजन अछि, लोकंक भितरे जो गोटे यूनिटी अछि एवं नॉर्म्स एंड वैल्यूज को से बेसिकली रिलीजन कथा। सेमति रिलीजन मान धर्म मान गोटे सुपरनेचुरल पावर सेमति किछ, किए गछ को भगवान मानि जाउची, किए पत्र को भगवान मानि जाउची, किए पशु को मानि जाउची, किए पक्षी की मानि जाउची, किए टोटेमिज्म से देखिला स्टडी कले से टोटेमिज्म को ही से ये आइडिया टानले कि रिलीजन ये सोशल कंस्ट्रक्ट, सोसाइटी बनैछि ताको आ केमिति बनैछि ना कलेक्टिव बिलीव्स, कलेक्टिव बिलीव एंड प्रैक्टिसेस जोंटा कि सोसाइटी भीतर होउछि सेटा को से, that is very important point, this is very important point। then आउ कोन ना कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, प्रथम से कहले कोन सेम जिंस और से रिलीजन केमिति हेछि ना कलेक्टिव बिलीव, से कलेक्टिव कॉन्शियस कथा को आउछि, कलेक्टिव बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस। देन से कोन कहले ना रिफ्लेक्शन ऑफ द सोशल सॉलिडारिटी, शेयर्ड नॉर्म्स एंड वैल्यू। सेकंड है कोन ना कलेक्टिव कॉन्शियसनेस एंड रिलीजियस बिलीव्स। डरखाइम इंट्रोड्यूस कले द कांसेप्ट ऑफ कलेक्टिव कॉन्शियसनेस which represent the belief, morals and ideas shared by the member of the society. Collective consciousness which represents the belief, morals and shared member of society की beliefs and morals उपरे ये built है collective consciousness। and religion act as a vehicle for expressing and reinforcing this collective consciousness। collective consciousness को express करिवा, reinforce करिवा, सेटा religion ही को providing a sense of belonging and unity among the sense of belonging and unity among the individual collective consciousness। then totemism कथे जोंडे कहली कहउथि मु या पूर्वरु, totemism रो से यूज करथिले
ସେ କହିଲେ କି ଟଟେ ଗୋଟେ ଟଟେ ମାନେ ଗୋଟେ କାଠରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବନା ହେଇଥିଲା ଇଏ ମୂର୍ତ୍ତି ଟାଇପର ଯେମିତି ଆମର ଆମେ ପଥରରେ କରୁ କିମ୍ବା ମାଟିରେ କରୁଛୁ ତ ସେଇଭଳିଆ କିଛି ଆଫ୍ରିକାନ ଷ୍ଟଡିରେ ସେ ଯାଇଥିଲେ ଷ୍ଟଡି କରିଥିଲେ ସିଏ ଟଟେମକୁ ସିଏ ମାଗୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ନର୍ମାଲ ଟଟେମ ମାନେ ଗୋଟେ ସେତେବେଳେ ସେଠି ଭଗବାନ ଭଳିଆ ମାନୁଥିଲେ ତ ଟଟେମିଜିମ୍ କ'ଣ ନା ବିଲିଫ୍ ଇନ୍ ସେକ୍ରେଡ୍ ଅବଜେକ୍ଟ ଅର୍ ସିମ୍ବଲ ଯେମିତି ଆମେ ମାନେ ମୂର୍ତ୍ତି ବନଉଛୁ ମାଟିରେ ହଉ ପଥରରେ ହଉ କାଠରେ ହଉ ମୂର୍ତ୍ତି ବନଉଛୁ ସେଇ ଗୋଟେ ସିମ୍ବଲ ଯେମିତି ଆମ ଜଗନ୍ନାଥ ଗୋଟେ କାଠରେ ହଉଛି ନବକଳେବର ହଉଛି ଜଗନ୍ନାଥର ଚେଞ୍ଜ ହଉଛି ମୂର୍ତ୍ତି ବିଲିଫ୍ ଓକେ ଯିଏକି ଗୋଟେ ସେକ୍ରେଡ୍ ଅବଜେକ୍ଟ ଅର୍ ସିମ୍ବଲ ଅଫ୍ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟିଂ ଏ ଗ୍ରୁପ ଏଜ୍ ଏ foundational concept in understanding okay religion understanding re ଗୋଟେ foundational so totem in his view embody the collective identity so totem view ସେ କହିଲେ collective identity ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ୟୁନାଇଟେଡ ହେଇକି ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ ଯେ କି ଫୋକାଲ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା କି ରିଲିଜିୟସ୍ ସେରିମନି କରିବା ଏବଂ ରିଚୁଆଲ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ଦିସ୍ ଇଜ ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ସେକ୍ରେଡ୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରଫେନ୍ ସେ वर्ड डिफाइन कले कि सेक्रेड माने कौन जोटा कि पवित्र अति पवित्र एवं प्रोफेन माने कौन ऑर्डिनरी जोटा कि एवरीडे लाइफ रो तो सी दीटा को डिवाइड कले सी कहले दीटा को अलग बिटवीन सेक्रेड एंड प्रोफेन सेक्रेड जी कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी समथिंग जोटा कि अलग सेटा को सी सेक्रेड मानते एवं प्रोफेन जोटा कि एवरीडे माने आम खाऊचे पीऊचे नाचुचे बुलुचे यहाँ सब प्रोफेन माने जोटा कि समथिंग व्हिच इज वी आर प्रैक्टिस एवरीडे वी आर नॉट टेकिंग एज ए सेक्रेड तो ये सब कॉन्सेप्ट चले एंड लास्टली रिचुअल्स एंड सॉलिडारिटी डरखेम एम्फासिस द सिग्निफिकेंस ऑफ रिचुअल्स हेले कौन हम ना सोशल कोहेजन और इंटीग्रेशन रीइंफोर्स करे गोटे पूजा है गोटे फंक्शंस है वी आर ऑल टुगेदर मेट एंड ये गोटे कोहेजन और बॉन्डिंग को इंटीग्रेट करे बॉन्डिंग को रीइंफोर्स करे तो कम्युनल पार्टिसिपेशन हमने मिसिक पार्टिसिपेशन करवा रिलीजियस रिचुअल इंडिविजुअल रीअफर्म दैट दे आर शेयर्ड बिलीफ एंड वैल्यूज पिला छुआ हेले जन्म हेले बड़ हेले सी भी देखले ये सब सी भी पार्ट ऑफ द कम्युनिटी तो एग्जांपल इनस्टेड डॉक्टर व्यू सो ये पॉइंट तीन चारटा बुझिलो गोटे हला कोन तो ये तुमर को पढ़ा बड़े सोशल ओरिजिन ऑफ रिलीजन collective consciousness of religion totemism sacred and profane and rituals and solidarity similarly examples illustrate the Durkheim's views Christianity and Eucharisty in Christianity the Eucharist a central rituals involve the symbolic consumption of the bread and wine representing the body and blood of Christ representing the body and blood of the Christ. Through this ritual, Christians reaffirm their collective belief, emphasizing solidarity, unity as a part of religion. Example देले कोन Christianity रो Eucharist गोटे रिचुअल्स अछि ओके सेइथरे गोटे सिंबॉलिक कंजम्पशन ऑफ ब्रेड आ वाइन समस्त तुम देखि दियो क्रिश्चियनिटी वाइड पीके मूवी रे देखि थिबो जोंडे कि तो रिप्रेज माने क्रिश्चियानी को वाइन दियंती अमेरिकान नहीं जाइथिबो वाइन से नहीं पहुंची दियो क्रिश्चियन देखि ओ नहीं पहुंची जाइथिबो कोठी इस्लाम तांको ये रे सो सेमान को पई वाइन ठीक नो सो ये सब सेमती so through this ritual so Christian करना collective belief को ensure करंती solidarity and unity for religious similarly Hinduism and temple worship जानिचो आमे टेम्पल वर्शिप बहुत सिग्निफिकेंट प्रैक्टिस करती कि जोंडे कि रिचुअल्स हो प्रेयर हो डाइटिस को ऑफरिंग करवा हो तो हिंदू कलेक्टिवली एंगेज होती रिचुअल्स जमती एबे छठ पूजा गला बिहार रे ओके हमर दुर्गा पूजा गला समस्ते गोटे माहौल थाए रिचुअल्स फेस्टिवल माहौल थाए समस्ते यूनिटी एंड सॉलिडारिटी तो Durkheim elementary form of religious life offered groundbreaking insight into the social understanding प्रथम थर पई ये Durkheim देथि वेरी डीप स्टडी होता है ये कॉन्सेप्ट आम भाभी नथिलु सी देले ही हाइलाइटेड द सोसाइटल ओरिजिन ऑफ रिलीजन फोकसिंग ऑन कलेक्टिव कॉन्शियस रिचुअल्स सिंबल्स दैट क्रिएट okay this is how you can write the answer are you satisfied with the answer or not are you writing this kind of answer the examination no you are not but you need to this is how sociology answer you need to write and it will not develop overnight guys by watching this video you will get the information but you need to develop by your own and for development it need time you need to practice again and again every day basis practice
Getting 240, 230 is not important, but important is getting to a 90, 300, 3. That is the basic difference. And जे 300 न रखुची मेजॉरिटी पिला 300 तळकु जो माने रखुचंती 290 प्लस जो माने रखुचंती प्राइस समान तो ऑप्शनल तुमको सिलेक्शन दबो रैंक भी दबो. So understanding religion as a product of society allows Durkheim to shed light on the fundamental role play in shaping and reflecting the collective conscience of the community. Okay, so how you are enjoying or not? No psychology optional available nahi, only I am giving sociology. I am giving only sociology. Okay, so are you enjoying or not? The questions I am discussing, you are enjoying or not? So social research, in social research hypothesis is crucial element. So hypothesis माने कौन कहलो? एज्यूम करो आमर गोटे हाइपोथेसिस अच्छी हाइपोथेसिस बेसिकली गोटे थियोरी कौन थियोरी एज्यूम करो कि ओडिया लोक केमिति एज्यूम करो कि ओडिया लोक हेले अळसुआ दीपर बेले सोई जाती सेटा माने नॉर्मल सोसाइटी कोन एटा परसेप्शन अछि द परसेप्शन बिफोर स्टडीइंग or before research, before you are getting the research theory or getting the original theory, you need to have a basically reference point. There is a reference point everywhere. बिना reference रो किछि नाही, science भी नाही, किछि भी नाही. So reference point हैला कि hypothesis. जोटे कि hypothesis may be true ही पारे, may be false. And you are examining the hypothesis. Assume that the people of Odisha are lazy. जोटे कि तुम्हें ओवरऑल पचार देले लोकन को तुम्हें कहि देबे किंबा याउरी पूर्व रिसर्च रो किछि अछि डाटा सेही अनुसार अछि बट 10 वर्ष पूर्व रहितला कि 5 वर्ष पूर्व रिसर्च हेतिला बट एबे सेटा नाही तो एबे जदि सेटा नाही ताकू केमिति ताले जानिबा ताकू रिसर्च करिबा डाटा कलेक्ट करिबा रेफरेंस पॉइंट हैला कि लेजी अछंती सेही लेजी अछंती रो डाटा कलेक्ट से माने करले एवं डाटा कलेक्ट करी कि फाइनली से डाटा बेसिस the basis of that data they actually examine the hypothesis and if hypothesis is true if hypothesis is true then it is okay if hypothesis is not true then it will reject the hypothesis and create new hypothesis A hypothesis crucial element that guides the process. It provides a tentative explanation or a prediction that can be tested through data collection. So according to Godday and Hutt, a hypothesis is a position which can be put test determine its validity. Puts to test to determine its validity. Simple terms, a hypothesis is an assumption. A hypothesis is an assumption or statement about the relationship between two or more variables. That the researcher seeks to verify. Okay, जोटा कि मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कली टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस गोटेला डेस्क्रिप्टिव हाइपोथेसिस गोटेला रिलेशनल हाइपोथेसिस
A characteristic of the variable unemployment is higher among the youth. ये hypothesis descriptive. Then say characteristic variable describe relational hypothesis indicate relationship between variables, education level, effect income. Causal hypothesis states cause and effect high relationship, poverty lead higher crime rates. Null hypothesis states there is no relationship between variables. Alternative hypothesis contradicts the null hypothesis. Contradict करे, stating there is a significant research design is a blueprint or plan. और blueprint or plan blueprint that कौन करे ना ये guide करे collecting analyze करिवो interpret करिवो data जनरली डिजाइन करियो ना डिजाइन करिया पूर्व hypothesis रहले इजी हुए to ensure that evidence obtained जोंटा कि आमे रिसर्च रु पाइलु ये क्वेश्चंस को हमर जहा जहा क्वेश्चन ताको एक्यूरेटली करिवो टेरलिंगर कहले कि रिसर्च डिजाइन इज द प्लान और द स्ट्रक्चर रिसर्च डिजाइन पे भी हेल्प करे ये बहुत प्लान और स्ट्रक्चर एंड स्ट्रेटेजी ऑफ इन्वेस्टिगेशन conceived so as to obtain answers to research so as to basically research questions को तार आंसर दवा पाई ये ट्राई करे टाइप्स ऑफ रिसर्च डिजाइन आमे क्वांटिटेटिव रिसर्च जोंडे कि न्यूमेरिकल डाटा एंड स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करे क्वांटिटेटिव माने बुझ परजो थियोरीज को टेस्ट करे जो थियोरीज ऑलरेडी जोंडे कि हाइपोथेसिस अछि ताको टेस्ट करे रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स डेस्क्रिप्टिव जोंडे कि मु कहितली एबे रिसेंटली चाहे describe the characteristic of the population and phenomena. Experimental involve manipulating an independent variable to determine its effect on variable. Correlational research examine the relationship between two or more variable without manipulating them. Causal aim to determine a cause and effect relationship. Okay. Qualitative research focuses on understanding experience, meanings, and perspective in depth. So, then exploratory research involves small sample size, explore problem or phenomena. ये सब हमें case study research. These are mixed method of research. Qualitative research इटा ला quantitative. The types of research design deep है गुडाला qualitative और गुडाला quantitative. Quantitative ला इटा under इटा, qualitative under इटा. Then finally conclusion. So hypothesis provide direction to research. Hypothesis provides direction to research, while research design offers a structural framework to test that hypothesis. Well-formulated hypothesis combined with a sound research design leads to scientific, objective, and reliable findings, forming the core of the sociological and last question देखिबा आजिर देखिबा जदी what is observation? Give for advantage of observation as a data collection. हमें डाटा कलेक्शन टेक्निक्स अच्छी डू यू नो ऑब्जर्वेशन हो एक्सपेरिमेंट हो क्वेश्चनर हो देन केस स्टडी हो ये सब आम डाटा कलेक्शन टेक्निक रे यूज कर डाटा कलेक्शन गोटे वन ऑफ द मेन जोटा कि इंस्ट्रूमेंट सेटा ऑब्जर्वेशन ये वन ऑफ द मेथड डाटा कलेक्शन जो थे रिसर्च डाटा को रेकर्ड करती ऑब्जर्व करती बिहेवियर तार तार एक्शंस तार इवेंट जोटा कि नेचुरल सेटिंग एजिटी जो अच्छी जहाँ ऑब्जर्वेशन करने कौन दरकार तुम्हें जो जो मान लिया ट्राइबल सोसाइटी को ऑब्जर्व करने चाहूँ तो ट्राइबल सोसाइटी ऑब्जर्व करने ट्राइबल एरिया को तुम तो अकॉर्डिंग टू पीवी यंग इट वेरी इंपोर्टेंट अकॉर्डिंग टू पीवी यंग ऑब्जर्वेशन मे बी डिफाइंड एज ए सिस्टमैटिक डेलिबरेट स्टडी तो आई ऑफ स्पॉन्टेनियस ऑकरेंस द टाइम ऑफ देखो मु कौन करूची तुम्हें स्लाइट डिफरेंस मु करूची तुमरो आंसर तुमरो माने आंसर राइटिंग आ मोर मु कौन कली ना सबु आंसर रे सबु इंट्रोडक्शन हो डेफिनेशन रे हो मु टिके थियोरिस्ट मानकर या थिंकर मानकर कोड्स टाको इंक्लूड ओके सोशल रिसर्च ऑब्जर्वेशन हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग रियल लाइफ ऑफ बिहेवियर रेदर देन रिलाइंग सोनली और ऑन वर्बल रिपोर्ट्स और क्वेश्चनर कौन हुए क्वेश्चनर आमे क्वेश्चंस पठि दो क्वेश्चन समस्त मेल को गला या किसी जड़े दी जन लोक कहलु जहाँ ये क्वेश्चन बांटी दे से सोसाइटी रे से माने सब आंसर टिक टाक मारदेवे तेल नहीं आसला कि मेल थ्रू पठेदेलु से माने 15 दिन भीतर फॉरवर्ड मेल रिटर्न कले तो से आंसर देकी रिटर्न कले तो यू जना पड़ा कौन ना तांकर आंसर मे बी नेचुरल सेटिंग एजिटी ना ऑब्जर्वेशन वेरी इंपोर्टेंट
ऑब्जर्वेशन बेसिकली टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन देखिए गोटे पार्टिसिपेट ऑब्जर्वेशन कि रियली जे रिसर्चर जाकि ऑब्जर्व करिवो नॉन पार्टिसिपेट जो ऑब्जर्व विदाउट डायरेक्ट इन्वॉल्व स्ट्रक्चर ऑब्जर्वेशन गाइडेड बाय चेकलिस्ट और प्री डिटरमाइंड कैटेगरी अनस्ट्रक्चर फ्लेक्सिबल थाए ओपन एंडेड थाए विदाउट फिक्स्ड एडवांटेज करना डायरेक्ट फास्ट हैंड इनफॉरमेशन जाकि तुम डायरेक्ट सीट जाकि स्टडी करिवो जो नेचुरल डिपेंडेंट ऑफ द रेस्पोंडेंट विल रिवील्स नॉन वर्बल बिहेवियर कॉन्टेक्सचुअल अंडरस्टैंडिंग ये सब आउ डिटेल्स रे कहूनी तुम पाठ पढ़ारे तुम्हें आम क्लासेस नौ ये सब डिटेल्स स्टडी करा जाए ऑब्जर्वेशन इज वैल्यू मु तथापि बहुत जिनस मुझे भल से बुझी सो दैट तुम्हें क्लारिटी हो जेतिक भी जानुछ एठू यूट्यूब क्लासेस यू गेट द क्लारिटी दैट इज फॉर श्योर ओके सो सोशियोलॉजिकल रिसर्च रे ऑब्जर्वेशन टेक्निक यूज जाए जो ऑब्जेक्टिव रिलायबल एंड कॉन्टेक्चुअल डाटा ऑन ह्यूमन बिहेवियर when applied systematically it greatly enhance the accuracy and validity तो जो माने एपर्यंत सोशियोलॉजी फाउंडेशन को जॉइन करना जॉइन तुम गोटे यूनिट सरलाणी मु पेपर 2 रु स्टार्ट करी पेपर 1 या पर आम देखा सो पेपर 2 रु मात्र 1.5 मास भर पेपर 2 पेपर 1 टी अधिक समय लगे तो ऑलरेडी आई हैव स्टार्टेड यूनिट 1 सरलाणी पेपर 2 रे मेंटरशिप रे भी ये क्लासेस किसी फ्री क्लासेस मेंटरशिप रे रहउची देन मु यूनिट वाइज तुमको एवरी यूनिट रे वाइज केते क्वेश्चंस हेई परिबो तार क्वेश्चंस करेबी तार रिलेटेड वैल्यू एडिशन देबी तो डू दैट इज फॉर तुमरो मेंटरशिप आई सोशियोलॉजी ऑप्शनल एंड मेंस रो जीएस टेस्ट सीरीज आपन बिना रे आपन चाहे इथर क्वालीफाई करंतु न करंतु टेस्ट सीरीज नियंतु त आपन लॉस जीवनी काइना टेस्ट सीरीज ही आपन को सिलेक्शन दबो मेंस ही सिलेक्शन दबो प्रीलिम्स किछि काम रे नुह मेन्स रो टेस्ट सीरीज प्लस मेंटरशिप रे कौन हम ना सबू टॉपिक वाइज आप डिस्कसन हो देन आपन को वीकेंड रे जाइए तार टेस्ट देबे तो बेटर पाई परिबे तो अंडरस्टैंडिंग हो तार वैल्यू एडिशन पाइबे ता से सब्जेक्ट रिलेटेड पीआई को डिस्कसन हो एवं टॉपिक डिस्कसन दैट्स इट फॉर टुडे गाइस थैंक यू फॉर वाचिंग इफ एनी डाउट टू जॉइनिंग 8926326334 you can join this number you can contact this number for your preparation ये फाउंडेशन कोर्स जीएस रो फाउंडेशन कोर्स गोटे आम स्टार्ट है सुपर 30 बैचेस से आपण मैंने ऑफलाइन रे जॉइन करंतु कि ऑनलाइन रे जॉइन करंतु से भी आपण गोटे नेक्स्ट ईयर पूर्व एग्जाम प्रीलिम पूर्व सिलेबस सरी जाइथिबो एवं गोटे सिस्टमेटिक वे रे आपण चारिटा जीएस एसए सब किछि तो से भी जॉइन करि परिबे तो जो माने सांग साथी जो माने आपनकर अछंती ऑनेस्टली प्रिपरेशन करिया चाहू केवल मात्र गोटे बैच रे 30 जन काम रहन मैक्सिमम so that I can guide you. Thank you guys, thank you for joining. God bless you.